We were discussing in last class. टॉपिक था आपका एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, जिसके अंदर बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे. व्हाट आर द एलिमेंट? देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? कितने बताए थे आपको? 6 elements were there, and we have studied about solar radiation, wind, and temperature and humidity. ये हमने कर लिया था. So next is your, let's start with the is one, precipitation. So first of all, tell me what is the meaning of precipitation? क्या मतलब होता है precipitation का? रेनफॉल, स्नोफॉल, रेनफॉल, स्नोफॉल. ओके, इसके अलावा भी कुछ होता है? ओले गिरना, यस. और कोई इसके अलावा? अच्छा, बेसिक मीनिंग क्या हुआ प्रेसिपिटेशन का? सी, द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन इज, हम डायरेक्टली रेनफॉल नहीं बोलते हैं. नो डाउट रेनफॉल इज मेजर सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स इट इज एनी एनी अमाउंट और एनी फॉर्म. ठीक है, जिस भी फॉर्म में वाटर आपका अर्थ के ऊपर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन. दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, right? So any form due to which the water is there on the earth, it's said to be the type of precipitation. So it could be a rainfall. It may be like sleets. Okay, hails are there. Okay, so there are a number of sources for it. Snowfall is there. So in any form, if water is coming to the earth, it is called as precipitation. As far as these climatic conditions are concerned, well, like precipitation को लेके हमको क्या ध्यान रखना है? So especially it governs the design part. Okay, it governs the design part. So when it comes to the design of roof, suppose if you are designing a house in the Himachal or in Jammu Kashmir, and suppose if you are designing a house in Rajasthan, or let's say MP, UP, in these areas. So there is some difference in design of the roof system over there. That is all dependent on the this particular criteria of climate, or this particular element of the climate, because the type of precipitation will decide that what amount of load will be there on your roof, right? And what are the challenges viewing that particular climatic condition, not only in terms of load, but sometimes in terms of the openings also, that on which wall you have to provide the opening in that case. So it becomes challenging sometimes, how much cantilever you have to provide over there. Okay, so these are the factors which affect our building planning in these special regions. Growth of vegetation is affected by it, as written over here, right? So nearby plants and vegetations are being affected there. So basically precipitation is nothing but the amount of rainfall or snowfall. Why rainfall and snowfall? Because these are the major sources. In between these two, even rainfall is considered as precipitation sometimes. So it becomes synonym, because it is most widely used term in precipitation. Because if we talk about precipitation, that means we are making our discussion on rainfall majority of times, right? So that's why it becomes a synonym of precipitation. But precipitation does not mean rainfall only. It includes snowfall, slates. Okay, there are a number of other things we'll look into next slides. So it decide that what challenges are there. So you have seen the slanted or the roofs, pitched roofs over there in the regions of Himachal Pradesh, in the region of Jammu and Kashmir, okay, in the upper belt region of India. Why is it so? I think I have discussed it earlier also. हम इस बारे में एक बार डिस्कशन कर चुके हैं थोड़ा बहुत, जहां तक मुझे याद आ रहा है. Why the क्या roofs सर, in एक the बार Rajasthan is flat? Why the roof system in the Rajasthan is mostly flat? In Rajasthan, MP, and the rest of the Indian states, it is flat. Whereas in case of Himachal Pradesh, in case of Jammu and Kashmir, it is pitched roof, or let's say slanted roof over there. Why?
सर उन स्टेट्स में मतलब बर्फबारी वगैरह ज़्यादा होती है सर, अपने ज़्यादा ना तो बारिश होती है। यस, ड्यू टू accumulation of the snow, snowfall के कारण ऐसा हो रहा है, राइट, ड्यू टू दी स्नो, because हाँ सर, अगर you वहाँ know पे very फ्लैट well रहेगी तो, that the, वहाँ yes, yes, फ्लैट रहेगी तो सर ज़्यादा वो, अगर हाँ रेनफॉल बोलिए होगा बोलिए, ना, स्नोफॉल होगा तो फिर दिक्कत आ जाती है फिर। right, correct, right, the snowfall gives immense dead load on the roof system as compared to the rainfall, right? So rainfall is not a challenging part here, but the snowfall is a challenging part. Now, where snowfall occurs, it occurs in the upper belt region of India, in the top region, that is Jammu Kashmir, Himachal, and all states on that periphery, right? So that's why the roofs are slanted there, so that there should not be any accumulation of ice over there. There should not be any accumulation of the snowfall. Otherwise, what will happen? The dead load of the roof will increase, and if it is not designed to carry that much dead load, in that case, what will happen? The roof will going to collapse. Even sometimes, means it is not like that, that you cannot design for that load. You can design it, but it becomes uneconomical. You are designing it for unnecessarily, because it is not the case that snowfall is going to occur for the overall 12 months. ऐसा नहीं होने वाला है कि 12 ही महीने स्नोफॉल होने वाला है. So just viewing that particular reason, if you are designing something which is involving a huge fund over there, that is something wastage of money. Okay, so that's why we do not prefer the flat roof over there. Okay, that's why what we are considering, that there should be pitched roof over there, so that accumulation will not be possible. As soon as the snow falls on that roof, it travels down to its path. ठीक है, इसलिए स्नोफॉल का accumulation वहां नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा, डेड लोड नहीं बढ़ेगा. डेड लोड का क्या मीनिंग है? देखो, एक तो होता है लाइव लोड, एक होता है डेड लोड. डेड लोड का मीनिंग क्या है? वो लोड लाइव जो लोड, सर दैट इज परमानेंट ड्यू टू लगा दी रहता है। मूवमेंट ऑफ दी, हाँ, जो परमानेंट है. लाइव लोड क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर डेड बात. लाइव लोड क्या है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ दी ऑक्यूपेंट्स. जो बिल्डिंग के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, उनके मूवमेंट के कारण वो जो लोड आ रहा है, दैट इज लाइव लोड. बट व्हेन इट कम्स टू डेड लोड, दैट मीन्स द लोड ऑफ द स्लेब इटसेल्फ, इट्स अ डेड लोड. आपका जो स्लेब है उसका डेड लोड, उसका वेट, वो भी डेड लोड है. ठीक है, उसके अलावा कोई मशीनरी अगर वहां पे आपने रखी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेड लोड. सो परमानेंट नेचर के जो लोड है आपके, दैट कम्स अंडर डेड लोड कैटेगरी. सो दैट snowfall is even of that kind, that once it accumulate, it it uh, it freeze over there, okay, due to the climatic condition, and that's how it become a part of dead load over there. So it increases the dead load, and uh, with the increase in the snowfall, the dead load will increase continuously. So there is some limit of the slab. We know very well that there is some limit of the slab to carry the, or we can say that there is some limited capacity of the slab, that how much amount of load it can carry. If it is increasing continuously, that means it is somehow challenging for us. So that's why we have to design it for in this way, that the load should not increase continuously, and if snowfall occur, it should transfer to the ground by a proper path with the help of this pitched roof. ठीक है, so depending on precipitation we have to plan it in this way. सर Whereas in case of the others, yes, बोलिए. सर उदयपुर में भी सर जैसे Yes, कि पिच्ड रूफ वाले एक आध मकान तो बने हुए देखे थे सर। that is by from the, we can say that from elevation point of view, वो तो आपका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं. ऐसी सर कोई वो ऐसा नीड यहाँ पर नहीं है. सर वो था भी एक बंगला ही था वो सर, जैसे सेक्टर 11 में एक 4000 स्क्वायर फीट पे Yeah, शायद in बना हुआ। most of the cases, yes, in most of the cases you will see pitched roof for bungalows, or for the let's say for resorts, where the additional architectural appearance is required. Okay, in that case only we are going to adopt the pitched roofs. But it is not challenging as in the case of the climatic conditions. Climatic conditions are not forcing you to design the roof in this way, है ना. क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आपने डिजाइन नहीं किया है.
तो एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें पिच भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, और कोई अपनी अलग से डिजाइन भी दे सकता है इनके अलावा भी, तो दैट इज पॉसिबल ऑल्सो। बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो व्यूइंग द क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट? क्लियर है? यस सर। आई थिंक इफ यू आर एबल टू सी दिस बैकग्राउंड, जो इस पर्टिकुलर पीपीटी में जो मैंने बैकग्राउंड यूज किया है, इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्ट ओवर देयर, यू कैन सी द स्लैंटेड रूफ ओवर देयर। आप देख पा रहे होंगे कर्सर के यहाँ। हाँ सर। So that is one example for it, that pitched roof is being used here, but it is uh, unless and until we do not know about the place, we can not come to any conclusion. But as of now, the building seems to be a resort building because there is swimming pool and all these things are there. Okay, so as far as we know that if it is not the case of climatic conditions, then we should go for the optimum design. ठीक है, तो उसके लिए optimum design पे या पे आपकी economical design पे ही आपको जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन शुड नॉट बी सेलेक्टेड ओवर देयर। ठीक है, तो व्यूइंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ही आपको जजमेंट करना है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की ही अलग अलग फॉर्म है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सी थी? आपकी स्नोफॉल की। ओके, ओके, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द रेनफॉल, so let us discuss about that first, then we come to the next one. So when it comes to rainfall, or when it comes to the other states of India, in that case what will happen? थोड़ा सा नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से, किसी की तरफ से, एक बार ऑडियोज म्यूट कर दें अपने। थैंक यू। एक बार चेक कर लें, ऑडियो शायद किसी का ऑन है आपका। ओके, so when it comes to the other states of India, what will happen? See, we have already dealt with the challenging part। अब कोई challenging part नहीं है, but rainfall हो रही है, and if you want to use it effectively, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप rainfall को effectively use करना चाहते हैं, तो भी building planning is helpful for you। How? You can do effective techniques like the implementation of a good rainwater harvesting system. That is very important thing over there. So innovative things like this, the orientation of the building, the rainwater harvesting techniques, groundwater recharge pit. Okay, these things will impress your client that yes, you are dealing in some engineering perspective। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन जब आप देंगे तो वो आपकी प्लानिंग और आपके डिजाइन से इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, नो डाउट इस तरह के सॉल्यूशंस हर कोई अडॉप्ट नहीं करता है आज की तारीख में, क्योंकि everyone is concerned about their budget, their economy। Okay, so if you are able to provide them these all facilities with a good economy in the construction project, then they will really appreciate it। Okay, and it is going to contribute to the nature also। So these are again important things, that in case of flat roof or even in case of pitched roof, even you can adopt a good rainwater harvesting system over there। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छे से किया जा सकता है इन केस ऑफ फ्लैट रूफ, बट इन केस ऑफ पिच्ड रूफ भी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सर। हाँ बोलिए। सर जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब मकान बन रहा होता है उसी में बना सकते हैं, या फिर बने बनाए हुए मकान में भी हो सकता है? नहीं, आप दोनों केस में कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं दोनों ही केस में। ठीक है, बने हुए मकान में भी आप कर सकते हैं, और जब आप बना रहे हैं तब तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जब बना रहे होते हैं तब हमारे पास फ्रीडम ज्यादा होती है, और बने बनाए मकान में करना है तो कुछ हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक तरह से थोड़ा सा बर्डन टाइप हो जाता है वो, बट ठीक है, हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली कितना एरिया आपके पास अवेलेबल है, हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी पर्सन यू आर डिजाइनिंग द सिस्टम, कितनों के लिए आप डिजाइन करें, या हम उसको इस सेंस में देखें कि आप उसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स पीपल यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम only to recharge their borewell। Okay, so that is a completely different system। Sometimes people use rainwater harvesting system to use the surplus water only।
That means that they do not require the water in their kitchen or in their other facilities of the house, but they require for washing of car, they require for cleaning of the house. That means a separate storage can be there, but no treatment units will be required over there. So that is a even a different system. Sometimes the occupants of the building require that the water should be there for the drinking purpose also. Then you must pay attention towards the treatment units also. आपको ट्रीटमेंट यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ओके. कितने, अच्छा, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो कितने लोग हैं उस घर में जिनके लिए आपको डिजाइन करना है, उस कैपेसिटी का टैंक आपको बनाना पड़ेगा. वेदर योर रूफ सपोर्ट दैट मच कैपेसिटी और नॉट, ये आपको चेक करना पड़ेगा. तो दीज आर ऑल थिंग डिपेंडिंग ऑन दैट. तो ये कई बार थोड़ा सा लेबोरियस हो जाता है जब घर बन गया है उसके बाद करना, लेकिन जब बन रहा है देन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन अबाउट इट. क्लियर है? दोनों में ही हम कर सकते हैं. सर तो जैसे कि ये मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का काम पीएचईडी ही करती है या फिर एक क्लाइंट या जो ओनर है हाउस का वो भी किसी और से करवा सकते हैं? नो नो नो. देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो फॉर एवरी हाउस इट इज कंपलसरी, फॉर एवरी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग it is compulsory, for every governmental building it is compulsory. When we come to building by laws, I will tell you about this, that in every norms it is written that rainwater harvesting system is must, especially in case of Rajasthan it is must. But people are not adopting it, even government is not enforcing it in this way, right? So that's why there is some loopholes. But if you want to develop such a system, a private developer or a private consultant can even do these things. Obviously he may charge for his services, but ultimately he is doing good for the nature. तो प्राइवेटली भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन की कोई बात नहीं है. एज फार एज द लीगल प्रोसीजर इज कंसर्न, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी. क्लियर है? हाँ सर. ओके. और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं. These are all good things, like rainwater harvesting is there, orientation of the building, vastu shastra. If you are adopting this thing, that means you are making a house very peaceful, means you are making a house very livable over there, right? तो आप उसको रहने लायक बना रहे हैं असल में उस हाउस को. अदरवाइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं, बिल्डिंग प्लानिंग बहुत लोग कर रहे हैं, बट जिस वे में आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, जिस वे में आप उसको प्लान कर रहे हैं, वैसा करने वाले बहुत कम है. तो मेरी अप्रोच शुरू से यही है इस पूरे सब्जेक्ट में, जब भी मैं आपको प्लानिंग डिजाइनिंग के लिए बोलता हूँ तो इन चीजों पे फोकस करिए. ठीक है? तो वी कैन यूज द precipitation in the form of rainfall for the rainwater harvesting system design. Okay, whereas in case of snowfall we have to protect our building from that particular challenge. Yes, let us discuss about the different forms of precipitation. So these are different forms, but the major part is due to rainfall only. Okay, but there are other forms like dew, ठीक है, जिसको हम ओस बोलते हैं, मिस्ट जिसको हम धुंध बोलते हैं, फोग जिसको हम कोहरा बोलते हैं हिंदी में. ठीक है? रेनफॉल आप सभी जानते हैं, बरसात या वर्षा. हॉल, सॉरी, हेल, दैट इज जो ओलावृष्टि होती है या ओले गिरना जिसको हम बोलते हैं. स्नो, ठीक है, जो बर्फ जहाँ पे गिरती है. ठीक है? तो ये these are different forms of precipitation. So in any form, if H2O is coming on the earth in any form, that is called as a type of precipitation. उसी को हम क्या बोलेंगे? Precipitation का ये एक type है. Is it clear? So this is the overall discussion about the precipitation point. ठीक है? So till now we have completed 5 elements of the climate. Yes, yes. सर तो किसी हाइट से, हाँ बोलिए. जैसे किसी ऊंची हाइट से पानी गिरा ना, वो भी प्रेसिपिटेशन? किसी हाइट से नहीं. सी, दिस वर्ड precipitation came to us from the hydrological cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से आ रहा है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर कंडेंसेशन भी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर प्रेसिपिटेशन भी है. ठीक है? देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ओवर देयर. आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आई थिंक. कार्बन Yes, sir. साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. तो उसमें आप देखेंगे दैट इज वन ऑफ द स्टेप. उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी हाइट से डाल रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये वो पॉइंट है कि आपकी अर्थ पर वाटर कहाँ से आ रहा है. ऑब्वियसली अर्थ पे पहले कहीं आया होगा तभी कोई हाइट से डाल रहा है. सो दैट इज नॉट अवर कंसर्न. आवर कंसर्न इज दैट कि पहली चीज की अर्थ पे वाटर कहाँ से आ रहा है. सो इट इज बाय ऑल ऑफ दिस फॉर्म.
ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है 6 फॉर्म में, इसी फॉर्म में वाटर आता है अर्थ पे, दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब इसको आप कैसे यूज कर कुल रहे हैं, मिला के सर हाइट से इसको डाल रहे हैं नेचुरल। या आप इसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? यस यस, नेचुरली किस तरह से आ रहा है, राइट, गुड। तो वो भी, वो इसके अंदर आएगा। क्लियर है? हाँ सर। Fine. So these are all the 5 points. Now let us heading ourselves toward the topography factor, that is sixth one factor. See, this is not considered sometimes as a climatic factor. ये कोई climatic factor की तरह consider नहीं किया जाता है. Even in most of the books you will not found this particular point over there. ये point आपको बहुत सी book में मिलने वाला भी नहीं. So why I am considering this? Because it is an indirect factor. It influence all other, that all five parameter what we have studied, or all five elements what we have studied. It influence them. So when it comes to topography, topography is an indirect element of climate. Okay, first thing is that ये आपको पता होना चाहिए. Now, what is the meaning of topography? Topography means the physical appearance of the land or the nearby areas of your site, right? So that is the physical appearance, that how much undulations are there, how much plain area is there, how much sloping area is there. So it decides the topography of the entire region, right? So when it comes to topography, topography indirectly affects the five elements, different five elements, right? As I told you in stake effect, जैसा आपने देखा था stake effect के अंदर, hot air rises always upward, so it provides a medium for the upward winds, right? So in that case, if your site is on some higher elevation, you will face some different climatic condition. If your site is on some lower elevation, let's say for in a depression, let's say for in this particular picture, let's say you are constructing a house here in a depression, okay, on some lower elevation, then there will be different climatic conditions over there. So this topography is affecting the different elements of climate what we have considered, because we know very well that if wind position is changing, wind is directly linked up with the temperature, so temperature will also change. Okay, so again these both will make changes in the humidity of the region. So in this way it changes. We know very well that the direction of wind and the movement of the clouds are related very well. The presence of the hilly area will affect the gathering of clouds and the rainfall in a particular region. जहाँ पे आपने देखा होगा कि अच्छे पहाड़ हैं चारों तरफ से, वहां पे बरसात अच्छी होती है. It affects the condition in this way, this climatic condition, right? So in this way the topography will play its role. So we have to consider, or we should consider, this topography also. So based on its topography, a site में designated as की टोपोग्राफी कैसी है उसके बेसिस पे आप एक साइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लाइक प्लेन्स which have the flat slide site making an angle of less than 4 degree with the horizontal. Let's say suppose there is a horizontal plane on the earth, and with that if the 4-degree angle is there of your site, only 4-degree angle is there, okay, so it is considered as flat. In other sense, let's say it's 7% or less slope. What is the meaning of 7% slope? कोई बताएगा आप में से 7% स्लोप का क्या मीनिंग है? स्लोप को आप बहुत से वे में रिप्रेजेंट करते हैं. आप लिखते हैं 1/20, आप लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 45, ये भी स्लोप है. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 45, दिस इज ऑल्सो स्लोप. ओके, बहुत से पैरामीटर्स हैं. एंगल से आप डिनोट कर रहे हैं, परसेंटेज में लिख देते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7% स्लोप? See, when it comes to percentage, that means it is on the basis of 100. So when you move 100 mm straight, then only you are considering a 7 mm of elevation. That is defining the slope. अभी आपको एंगल पता चल गया होगा कि अब 100 mm हॉरिजॉन्टल मूव करने के बाद 7 mm राइज कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा यहाँ पे. That is slope, right? So in this way you define the slope. So if it is 7% means it's quite less. Okay, it is not a steep slope. It is quite less in the
measurement of the angle over there. So it is plane, it is considered as plane. Whereas if, when it comes to hilly, okay, so making an angle more than 20 degrees or slope is greater than 36%, that comes to the hilly topography. Whereas the undulating topography means wide variation over the entire length. Means for some of the portion there is some hilly area, whereas it making depression on the other side, then again hilly area, then depression. Okay, a series of these events or a series of this geographical formation is there, then it will be known as the undulating site or undulating topography. ठीक है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में आपने सुना हो तो उसको उबड़ खाबड़ हम बोल देते हैं कि ऊपर नीचे, बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं, बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द थ्री डिफरेंट टोपोग्राफीज। क्लियर है, तीनों आपको समझ में आ गया। In undulating grounds in an hot dry climatic regions it is suitable to construct a building in a depression. ठीक है, यहाँ डिप्रेशन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना सुटेबल माना जाता है इफ द ग्राउंड इज क्वाइट undulating. Undulating means there is series of disturbance in the ground, up and down, up and down, up and down. Okay, in that case it is considered good, considering the stake effect, that your building is situated in a depression, because we know that on the depression side the temperature will be suitable, the air will be less warm over there. Okay, so that's why the stake effect come to the picture at that time, and we will plan the building in some depression over there. For buildings on a slopes leeward side, see there are two conditions, leeward and windward. What is the windward? That means that the face of the, let's say for building or mountain जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए हो जाएगा। अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं सो द फेस ऑफ द बिल्डिंग, और अगर हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो द फेस ऑफ द माउंटेन। okay, which is facing the prevailing winds. Prevailing winds means the majority of winds is flowing in this direction. Okay, so that is the prevailing wind. So the face of the building, or let's say the face of mountain which is facing the prevailing winds, is called as the windward side, whereas the opposite face which is not directly facing the prevailing winds, it is called as leeward side. Right, so windward and leeward, these are two different sides. A windward location is one that is exposed to the prevailing wind, or which is directly facing the winds. Okay, conversely a leeward location is protected from the prevailing wind. Okay, so these are different uh, formations due to the geography of the area. Okay,